गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक साल हो चुका है इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ट्रीटी तब तक सस्पेंडेड रहेगी जब तक पाकिस्तान कुछ क्रेडिबली इंश्योर नहीं करता कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सितंबर 1960 में साइन हुआ था। वर्ल्ड बैंक इसका फैसिलिटेटर है। ये ट्रीटी साइन हुई थी जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान के बीच में 9 साल बाद, जब नेगोशिएशन शुरू की वर्ल्ड बैंक ने। ये ट्रीटी गवर्न करती है शेयरिंग ऑफ वाटर्स, जो है 6 मेजर ट्रांसबाउंड्री रिवर्स जो है इंडस वाटर रिवर सिस्टम की। ईस्टर्न रिवर्स जो इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए मिली है, वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान को एलोकेटेड हुई हैं, लेकिन इंडिया इस पर जो है नॉन कंजम्पटिव यूज़ कर सकता है इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। इस ट्रीटी ने परमानेंट इंडस कमीशन भी एस्टैब्लिश किया है। इसने 3 टियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया है, परमानेंट इंडस कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इंडस रिवर सिस्टम जो है क्रूशियल है दोनों कंट्रीज़ के लिए। इंडिया के लिए जो है ये एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर जनरेशन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तो ये लाइफलाइन ही है एग्रीकल्चर की। हिस्टोरिकली जो है ये ट्रीटी प्रिडिक्टेबल रही है वाटर फ्लोज में, और इसका जो स्कोप है वाटर रिलेटेड कन्फ्लिक्ट से वो भी रिड्यूस हुआ है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक्स के बाद जो है इंडिया ने इस ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया। अब इंडिया इस कहता है कि हम इस ट्रीटी के प्रोविजन से बाइंड नहीं है क्योंकि हमने इसको सस्पेंड कर दिया है, और इसके डिसीजन की वजह से जो है नॉर्मल फ्लो जो पाकिस्तान में आता है वो डिसरप्ट हुआ है। डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म भी जो है अफेक्ट हुए हैं। रेगुलर मीटिंग्स जो है इंडस वाटर कमिश्नर्स की वो भी रुक गई हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की वाटर प्लानिंग पर, फूड प्रिपेयर्डनेस पर, फ्लड प्रिपेयर्डनेस पर और ड्रॉट मैनेजमेंट पर। तो एक डाउनस्ट्रीम स्टेट होने की वजह से पाकिस्तान जो है वो सीवियरली इफेक्टेड हुआ है बाय इंडियाज़ डिसीजन। ठीक है, तो उसने यूएनएससी, आईसीजे, वर्ल्ड बैंक सबको जो है वो अप्रोच किया है, और लीगल आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि पाकिस्तान कहता है कि जो ट्रीटी है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि कोई कंट्री इसको सस्पेंड कर सके, सिर्फ एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इंडिया जो है ने जो इसको सस्पेंड किया है वो वॉलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को। अब जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने रूल किया कि इंडिया का जो डिसीजन है वो कोर्ट की कॉम्पिटेंस को डिप्राइव नहीं करता कि वो इस पेंडिंग मैटर्स में प्रोसीड ना कर पाए। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि जो ये कोर्ट है ये फॉर्म होना ही गलत है, क्योंकि जो है पैरेलल मैकेनिज्म चल रहा है ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट का। इंडिया ने इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस प्रोसीडिंग्स में, और रिजेक्ट कर दी है इसकी रूलिंग्स को। इंडिया जो है अपनी जो है लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट्स जो इंडस रिवर सिस्टम्स पर है उसे कंप्लीट करने में लगा है। पाकिस्तान इस ट्रीटी के प्रोविजंस को जो है यूज़ करते हुए रिपीटेड ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा है इंडियन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, और इंडिया जो है उन्होंने कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई है ताकि अपनी टेक्नो लीगल पोजीशन जो है वो न्यू डेटा और एविडेंस के हिसाब से दे सकें। और इंडिया आर्ग्यू कर रहा है कि सिचुएशन पिछले 65 साल में चेंज हो गई है, इसलिए इसको रीनेगोशिएट किया जाना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब इससे जो है मेजर लीगल और डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन हो सकता है। पाकिस्तान ने तो इवन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की बात की है इसके ऊपर। इंडिया का जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि ट्रांसबाउंड्री जो वाटर कॉपरेशन है उसको नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ हम लिंक कर रहे हैं, टेररिज्म के साथ। इंडिया के लिए प्रायोरिटी है कि अपने लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स को इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ बैलेंस करें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओमान। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओमान का जो स्ट्रेटजिकली लोकेटेड सोहार और सलाला इंडियन ओशन पोर्ट्स हैं वो वाइटल फूड एक्सपोर्ट्स जो हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं इंडिया के टू 6 जीसीसी नेशंस। ओमान क्या है? लोकेटेड है अरेबियन पेनिनसुला ऑफ वेस्टर्न एशिया में। ये शेयर करता है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर विद यूएई और वेस्टर्न बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया एंड यमन। ये शेयर करता है कोस्ट लाइन बॉर्डर्स विद अरेबियन सी इन द साउथ और ईस्ट में गल्फ ऑफ ओमान इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजिकली सिचुएटेड है माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ में। मस्कट इसकी कैपिटल है। पोर्ट ऑफ सलाला जो है वो इसका लार्जेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रिस्टन डा कूना। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश मिलिट्री मेडिक्स जो है वो रिसेंटली एक पैराशूट मिशन से पहुंचे हैं रिमोट साउथ अटलांटिक आइलैंड ऑफ ट्रिस्टन डा कूना में। तो ये ट्रिस्टन डा कूना क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है साउथ अटलांटिक ओशन में। लार्जेस्ट आइलैंड है ये उस ग्रुप का। वॉल्केनिक है ओरिजिन में। मिडवे बिटवीन साउदर्न अफ्रीका और साउथ अमेरिका पड़ता है ये। मोस्ट रिमोट इनहेबिटेड चेन ऑफ आइलैंड्स है ये वर्ल्ड में। डिस्कवर किए गए थे 1506 में एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर द्वारा, और ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का पार्ट है। ये आर्कीपेलागो जो है यहाँ पर कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ बोट या हेलीकॉप्टर से ही रीच किया जा सकता है। आउटसाइडर्स यहाँ पर सेटल नहीं हो सकते हैं या फिर वो लैंड भी नहीं बाय कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम मित्र पार्क। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने पीएम मित्र पार्क वारंगल तेलंगाना में इनॉग्रेट किया है। तो ये एक मेगा टेक्सटाइल हब होते हैं पीएम मित्र, जो कि एवरी स्टेप ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन को जो है एक ही जगह पर लेकर आते हैं। ठीक है, चाहे स्पिनिंग हो, वीविंग हो, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मेकिंग। तो 7 ऐसे अप्रूव किए जा चुके हैं कंट्री में, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों फील्ड्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसकी नॉडल मिनिस्ट्री है। तो ये क्या फीचर होते हैं यहाँ पे? इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है 800 करोड़ रुपए तक का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, 500 करोड़ तक का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मर्कोसुर ग्रुप। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईयू और मर्कोसुर का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो फार्मर्स का जो फेयर था उसके बावजूद जो है इसको एनफोर्स कर लिया गया है। तो मर्कोसुर क्या है? सदर्न कॉमन मार्केट है जो साउथ अमेरिकन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो एक साउथ अमेरिकन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। 1991 में क्रिएट की गई थी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और पीपल के लिए, और एक कस्टम्स यूनियन बनी है 1995 में। ओरिजिनली इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे इसके मेंबर्स बने। बोलिविया और वेनेजुएला ने इसको लेटर ज्वाइन किया। मॉन्टेविडियो यूरुग्वे में इसका हेडक्वार्टर है। और इंडिया और मर्कोसुर ऑलरेडी एक पीटीए साइन कर चुके हैं 2004 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ल्यूपस डिसीज। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर साल वर्ल्ड ल्यूपस डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली 10 मई को। ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो कि जिसमें कि इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली हेल्दी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को अटैक करने लगता है। इसकी वजह से वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होता है, डैमेज हो जाता है जॉइंट्स, स्किन, किडनीज, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स को। और ये लिंक्ड होता है पर्सन के इन्वायरमेंट, फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल फैक्टर्स से। ल्यूपस जो है बहुत ही कॉमन होता है अमंग विमेन देन मैन। मोस्टली अफेक्ट करता है लोगों को ये 20 to 40 ईयर्स एज के बीच में। और इसमें जो SLE है फॉर्म वो सबसे कॉमन है। माइल्ड और सिवियर होता है ये, और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। लगभग 70% ऑफ ल्यूपस केसेस यही होते हैं। ये ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है कुछ मेडिसिन के थ्रू, नियोनेटल भी होता है, मतलब न्यूबॉर्न्स को भी अफेक्ट कर सकता है। हर पर्सन को इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन और सिवियरिटी होते हैं सिम्टम्स की। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो डैमेज कर सकता है किडनी, लंग्स, हार्ट और इवन ब्रेन को भी। तो कुछ मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइकी स्पेसक्राफ्ट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा का जो साइकी स्पेसक्राफ्ट है उसने स्टनिंग इमेज जो है वो मार्स की जो है कैप्चर की है 5 मिलियन किलोमीटर्स दूर से। साइकी स्पेसक्राफ्ट 2023 में नासा ने लॉन्च किया। मिशन इसका था कि मेटल रिच एस्टेरॉयड जो साइकी है वहाँ पर रीच करना। स्मॉल वैन जितना साइज़ है इसका, और ये सोलर इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम का यूज़ करता है, पावर्ड बाय सिनॉन गैस। इसमें एक मैग्नेटोमीटर है जो एविडेंस देखेगा एंशिएंट मैग्नेटिक फील्ड का एस्टेरॉयड साइकी पे। और गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर इसमें है जो कि साइंटिस्ट को हेल्प करेंगे कि वो केमिकल एलिमेंट्स जिनसे कि एस्टेरॉयड का सरफेस मटेरियल बना है वो डिटरमिन कर सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन हैबिटेट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन हैबिटेट ने कैटलॉग ऑफ सॉल्यूशंस 2026-29 लॉन्च किया है। तो यूएन हैबिटेट क्या है? यूएन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है जो प्रमोट करती है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। इसको 1977 में एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर हैबिटेट 1 कॉन्फ्रेंस 1976 की। इसका सेंट्रल मिशन है कि सोशली इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स और सिटीज़ को प्रमोट करें। नायरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो असेंबली है इसमें 193 यूएन मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर हैं, और हर 4 साल में नायरोबी में ये कन्वेन की जाती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Indus Water Treaty. This topic is important for international relations. So it has been 1 year since India has placed the Indus Water Treaty in abeyance after the Pahalgam terror attack, and the Ministry of External Affairs has reiterated that the treaty will remain suspended until Pakistan credibly abjures cross-border terrorism. So what is this IWT? It is a water sharing agreement between India and Pakistan, which was signed in September 1960 with the World Bank acting as a facilitator. So this treaty was signed by Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistani President Mohammad Ayub Khan. This treaty governs the sharing of waters of 6 major transboundary rivers of Indus water system. So this the eastern rivers have been allocated to India for unrestricted use, while the western rivers have been allocated to Pakistan, and India is allowed limited non-consumptive use for irrigation, hydropower, navigation and domestic purposes. This treaty has established the Permanent Indus Commission, and which consists of one commissioner from each country to facilitate cooperation and information exchange. It also provides for a 3-tier dispute resolution mechanism, that is the Permanent Indus Commission for routine matters, neutral expert appointed by World Bank for technical differences,
court of arbitration for legal disputes. So Indus River system is crucial for both countries. That is for India, it supports agriculture, hydropower, and development needs of several states. For Pakistan, it is the lifeline of agriculture, fulfilling over 70% of its irrigation requirements. Treaty has historically ensured predictability in water flows, reduced the scope for water-related conflicts. Following the Pahalgam terror attacks in April 2025, India decided to keep the Indus Water Treaty in abeyance, which means that India no longer considers itself bound by the treaty's provisions for the time being, and India's decision has disrupted normal flows reaching Pakistan, affected data sharing mechanisms, and halted regular meetings of the Indus Water commissioners. Okay, so being the downstream state, Pakistan has been severely affected by India's decision. With limited unilateral options, Pakistan has pursued a strategy of internationalizing the dispute, and it has approached several bodies like UNSC, ICJ, World Bank, UN Human Rights Council. So Pakistan's core argument has been that this treaty contains no provision to suspend it. It only has a dispute resolution mechanism, but and it claims that India's decision violates international law. So, Court of Arbitration, which was constituted under the IWT mechanism, ruled last year that even though India has suspended this treaty, it did not deprive this court of the competence to proceed with the pending matters. India objected to the very formation of this court, saying that this parallel mechanism through the World Bank appointed neutral expert was already operational. Then why this court was established? India has refused to participate in its proceedings, and it has rejected its rulings. So, India is accelerating the completion of long delayed projects on the Indus River system. Historically, Pakistan has used the treaty provisions to raise repeated objections to Indian projects. India has constituted a committee of experts to strengthen its techno-legal position with new data and evidence. India argues that the situation has changed significantly over the past 65 years. Okay, so what are the challenges and way forward? So this issue could lead to major legal and diplomatic confrontation. Pakistan has even threatened armed conflict over this matter. India's decision sets a precedent for linking transboundary water cooperation to national security concerns like terrorism. And for India, the priority remains balancing its legitimate security concerns with its international obligations, while modernizing the treaty framework to reflect contemporary realities. So the next topic is Oman. This topic is important for your Science and Tech section. Oman's strategically located Sohar and Salalah Indian Ocean ports are facilitating vital food exports from India to 6 GCC nations. So Oman is located on the Arabian Peninsula of Western Asia. It shares a northwestern border with the UAE, Saudi Arabia, and Yemen. So it shares coastline borders with Arabian Sea and Gulf of Oman in the northeast. So it is strategically situated at the mouth of the Persian Gulf, and its capital city is Muscat. The port of Salalah is the largest port in Oman. The next topic is Tristan da Cunha. This topic is important for your international relations. So British military medics recently carried out a rare parachute mission to the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha. So this Tristan da Cunha is a group of islands in the South Atlantic Ocean. It is the largest island of that group. This archipelago is volcanic in origin. It is about midway between Southern Africa and Southern America. It was discovered in 1506 by a Portuguese explorer. It is considered as the most remote inhabited chain of islands in the world. It is a part of the British Overseas Territory. This archipelago has no airstrip, and it is accessible only by boat or helicopter. Outsiders cannot settle or buy land on these islands. So the next topic is PM Mitra Park. This topic is important for your economy section. Recently, Prime Minister of India inaugurated the PM Mitra Park in Warangal, Telangana. So it is a mega textile hub. PM Mitra is a mega textile hub which brings every step of textile production like spinning, weaving, dyeing, printing and garment making into one single place. There have been 7 approved PM Mitra Parks. Okay, so Ministry of Textiles is the nodal ministry for the same. The PM Mitra Park features integrated value chain, world-class infrastructure, public-private partnership. Ministry of Textiles also provide financial assistance up to 800 crore per park for greenfield projects and up to 500 crore per park for brownfield projects. So the next topic is Mercosur Group. This topic is important for international relations. So recently, European Union Mercosur trade agreement has been enforced even after farmers' fears of unfair competition. So Mercosur is the Southern Common Market. It is a South American regional economic organization created in 1991 for the free movement of goods, services, capital and people, and it became a customs union in 1995. It originally comprised of Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, but Bolivia and Venezuela joined it later.
So its headquarters is in Montevideo, Uruguay. Even India and Mercosur have signed a preferential trade agreement in 2004. So the next topic is lupus disease. This topic is important for your social issues. So World Lupus Day is celebrated is observed every year on 10th of May. It is a chronic autoimmune disease where the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs. It causes widespread inflammation and damage to joints, kidneys, skin, blood cells, brain, heart, and lungs. But the cause of lupus is not known, but they may be linked to a person's environment, family history, or hormonal factors. Lupus is much more common among women than men. It mostly affects people between 20 to 40 years of age. SLE is the most common form of this lupus, and it can be mild or severe. It can affect many parts of the body. It accounts for 70% of lupus cases. So there is also drug-induced lupus, which is caused by certain medicines. Neonatal lupus, which is rare, and it affects newborns. Everyone experiences a different combination and severity of symptoms, and if left untreated, it can progress to damage the kidneys, lungs, heart, and even the brain. There is no cure for lupus, but medicines and lifestyle changes can help to control it. So the next topic is Psyche spacecraft. This topic is important for your science and tech section. NASA's Psyche spacecraft has captured a stunning crescent image of Mars from nearly 5 million kilometers away. So Psyche spacecraft was launched in 2023 by NASA. It is on a mission to reach the metal-rich asteroid named Psyche. It is about the size of a small van, and it uses a solar electric propulsion system powered by xenon gas. Its magnetometer will look for the evidence of ancient magnetic field at the asteroid Psyche. We have this gamma ray and neutron spectrometer, which will help scientists to determine the chemical elements which make up the asteroid's surface material. So the next topic is UN Habitat. This topic is important for your international relations. UN Habitat has launched the Catalog of Solutions 2026-29. So UN Habitat is commonly known as UN Habitat, of course, and it is the UN agency responsible for promoting sustainable urban development and adequate shelter for all. It was established in 1977 after the Habitat 1 conference. Its central mission is to promote socially and environmentally sustainable towns and cities. Its headquarters is in Nairobi, Kenya. Its assembly is composed of all 193 UN member states, and it convenes once every 4 years in Nairobi to set global priorities and approve the strategic plan. Its executive board consists of 36 member states elected by the assembly. Okay. It also has a committee of permanent representatives, and which acts as a continuous oversight and advisory body. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.